Good afternoon, everyone. I'm Shraddha Nigam. I'm the associate at FEC IIT Guwahati. Welcome to this exciting live options trading session in collaboration with OptionX. Today's session is all about what really drives success in options trading and not just strategies, but real execution, discipline, and psychology. Now, it's my pleasure to introduce our speaker for today, Mr. Neeraj Kumar. Neeraj Kumar is an options trader with over 5 years of experience. He has worked closely with many active traders and interviewed hundreds of them to deeply understand real trading pain points and has built OptionX, India's first state of the art price ladder based options trading platform, focused on better execution and disciplined decision making. Before this, he worked as a data scientist with organizations like Wipro. He is a graduate of NIT Jamshedpur, and today he'll be sharing his practical insights on options trading, execution, and risk management, along with a live demonstration. There will be a Q&A session at the end, so all the onboarders are requested to be patient. And let's welcome Neeraj Kumar sir to the session. Hi all, hi everyone, and thanks for having me here. So a very wonderful happy new year to all of you guys. So let us start this session. So in the today's session, we are going to understand some simple market concept, and then we will also understand like what are the strategies and how to execute those strategies. And we will see one of the best trading platform out there in India, which is OptionX, and we will be seeing in the live session how this platform is making trading much easier, much faster, and much more profitable. So in this session, we are going to understand some simple market concept with a very basic example, and then we'll try to understand how that works in the real market scenario. Next, we will be also uncovering this price ladder, and we will also understand how to read option chain, and then we will understand option trading is basically it's a journey. Like it's a very long journey to become a successful trader. So first, we'll cover all these things, and then we will understand what are the trading mistakes, what are the common mistakes that the successful traders had in the earlier stages, and how they have overcome, and what are the advanced tools. There are like a lot of advanced tools now in 2026 are there that can automate your some of the strategies. You can basically have a lot of risk management so that your losses will be capped to a certain level. Then we will also see in the live market session like how to do a nifty option scalping, and how to do some of the automation, how to manage risk and all. So yeah, let us jump into the next section. So first of all, let us understand what how the market works, how the price moves. Okay, so in this scenario, we have taken a marketplace, and we have divided this marketplace into two categories. One is seller and the other one is buyer. So in the seller side, let's suppose there are Apple sellers in the marketplace, and these Apple sellers, they are selling these Apple at different prices. So these apples are nothing, these are just option. And at 100 rupee, so there are four Apple sellers are there, at 101 there are three, and like that different sellers are there. Now, in the market, one buyer came, called Amit. So he wanted to buy some apple. So he started with buying five apple. For five apple, so he initially bought four apple at 100 rupees because there were only four apple present at 100 rupees. So he got these four apple at 100. But when he went for buying the fifth apple, it has costed him 101. So you can see here. So now he has bought five different apples, and four costed him 100, and the last one costed him 100. Now if he went for buying again for the next apples, it will cost him 101, because now the last traded price was 101. So now the price has moved from 100 to 101. So this is how the buyers and sellers, they drive the market and the prices of options.
So now we'll take a different scenario where Amit predicted that the weather is going to be harsh and there might be rainfall. And because of that, the apple prices may skyrocket. So what he is assuming, the prices of these apple may go up to 150 rupees from 100, 101 or 102. So what he did, like he bought all the apples at whatever prices those were present. So now he has bought 10 apples at different prices. Once he is ready to pay like even higher prices, like he bought few apples at 100, 200, 105 also. So which means he is predicting the market trend to be bullish. So this is the same scenario in the real market also. When the buyers are willing to pay higher prices, that means the market is bullish. And same vice versa follow in the bearish trend, where the sellers are willing to accept lower prices. In that scenario, the market will be in bearish. And since Amit has bought these apple at whatever price it was present, so it means he has done a market order. So in market order, he will accept all like any price whichever present in the market. Now, since there were 10 apples and 10 apple sellers and he bought 10 apple, so it means there are 10 apples are traded. So in future, if the price goes up, he will sell out these apples at higher prices. So which means these 10 apples are getting traded in the market. So we call in the like in financial instrument term, we call this as open contracts. So there are 10 open contracts present in the market. And like there is also expiry of the apple, because after a certain time the apple will get spoiled and no one will going to pay a single penny for it. So we call it as option expiry. Now coming to the next part. So here the Amit now again he went for buying 5 apples. In this scenario, he is not willing to pay more than 100 rupees. So he got 4 apple at 100, but the fifth apple he need to pay 101, but he will stay here. He will wait for the option price to come at 100. But even sellers are not interested to reduce their prices. They are also at 101. So in this scenario, market will be sideways because buyers are not willing to pay higher prices and sellers are not willing to accept lower prices. So this is how you can like you can basically decide the market trend. uh, and then the type of order he has he did is the limit order. He has limit his price at 100, so this becomes a limit order. Now what is the marketplace that is there present in the real scenario in option trading? It's exchange basically. So there are two types of exchange. One is NSE and the other one is BSE. And then comes brokers. Brokers are nothing. They basically allows you to connect to the exchange. So it's a like a bridge between exchange and a trader. Now, where does this option X lies? So option X gives you an intuitive UI, a user interface, where you will be able to place or you will be able to do these trades, all the analysis and everything with a like much faster. So basically it improves you how you trade and how you execute. Now I think we have covered these terminology. We have understand a few of the things. Then there is a market depth, bids and offers. These are nothing. These are the number of sellers present at a particular price. So at 100 rupees, there are 4 offers. So it means offers are nothing. These are just numbers of buyers and sellers at different prices. And at 99, there are 4 buyers, which means it has a 4 bids. Now, uh, now coming into the real scenario, this is a price ladder. It is a very new concept that we have brought up in the market,
where you will not only see the prices, the bid and ask, you will be also able to place order on these prices. So if you see here in the, like, this is a ladder UI, and where there are different prices, and this 83 is nothing, this is just a price, this is the last traded price of this option, this instrument. So now if you see, there are at different prices, there are different number of bids. So at 82 price there are few buyers, then 81, and like that there are different buyers at different prices. In similar way, you will see there are offers at different prices, and once they will match, the price will, like, basically these are the drivers of prices. They will either move the price to upside or downside. Now coming to option chain. So basically in the previous slide we saw, uh, like, these are the price, this was the price of a single option, but they, in the market there are multiple options. And how these, what are these options? These are nothing, these are just a derivative of some instruments. There might be stocks, there might be indexes like Nifty, Sensex, or Bank Nifty. So we try to, like, these options are basically the derivatives of these indexes and these and the stocks. So Nifty 6th of Jan 26 150 call option is a single option. It's a derivative of Nifty. Now it has four different components. The first one is the underlier, which is currently Nifty, and this can be anything like HDFC Bank, ICICI Bank, or Reliance, anything. 6th Jan is the expiry of this option. So this option has a certain day expiry. At that particular day, the option price will become zero. So this is the expiry of this option, 6th Jan. Now 26 150 is the strike. So Nifty, we are basically betting that if this expiry comes, the Nifty price should be greater than this 26 150, or at somewhere at this price. And then we have this C, call option. Call option is basically we are betting the prices. If the prices goes up, the option price will go up. And in the put option case, it's just the reverse. So if the option prices, if the Nifty prices are going up, the put option will fall. I hope you have understood this concept. Now, how to read and how to understand what is going in the market, since there are multiple options are traded in the market. So you need to look out for all the options, like what are the prices of different options in the market. So for that, uh, first of all, here you can see, like, we have selected underlier, then we have expiry, and then there is a middle column where the different strikes are available. So at the center, this is 26 150. This will be the nearest to the current Nifty price. So we call it as ATM. I'll show it you in the platform itself. But here let's just understand how to read this option chain. So these are different prices. So if you want to see the price of Nifty 6 Jan 26 150 call option, you need to look here. Left side is call. So the price of this option is 115. Now we have one more column called OI and put OI. These OIs are nothing, these are option contract. So in the example we saw, like, there were 10 Apple which are being traded in the market. So the number of option contract was 10 in that scenario. But here, this option 26 150 call option, it has a total 37 lakhs of open contracts in the market. And if you see for different strikes, 26,000 option has the highest put OI. So a lot of people, they are betting on this put option. So, and here, if you see in the call side, people are betting at 26,300. So a lot of people, they trade individually, they bet on 26,000 option, or either they will bet on 26,300,
or 26,000. But some of the trader, like those who are into selling or those who build strategies, they combine these two options and build a single traded instrument. So if you see, if we combine this 26,000 and 26,300, it will become a single instrument, and you can analyze, you can do a lot of analysis on this strategy. So this strategy is nothing. This is basically the combine of two different options. We have combined 26,000 and 26,300 options. Now we will call this strategy strangle. So this is basically a screenshot taken from the OptionX platform. This is a strategy builder where you will add different options, and there, if you like, there are different strategies. So one of the strategies is triangle, like that we have iron condor, straddle, batman, and there are different more strategies where you will be basically trading multiple options together. And there are also few things that you should be considering before trading these strategies, like what will be the max profit if you trade this strategy, this triangle. What will be the loss? So here in this case, the loss will be infinite. And what will be the break even? The break even is a point from there you will start earning or start gaining some profit. So there will be two break evens. One will be here at the start, and one will be here at some point. Now, what will be the funds needed, and what will be the probability of profit? So you can understand like how much like probability is there if I trade this strategy, how much how much profit I can gain from this strategy. Now you can also see a combined chart of this strategy. So the LTP, if you combine the last traded price of both of these two instruments, you'll get a combined price, combined LTP. So this is the chart of this strategy. Now coming to the common trading mistakes. So there are a lot of factors that basically prevents you to become a successful trader. So we'll understand one by one, and then we'll try to use these we'll basically try to implement this in the real market scenario when we will be doing live session on OptionX. Now the first thing is you should be having a proper planning and execution. So for that, you should first have a you should first have to decide your trading style. So the trading style can be directional or non-directional. So what are these directional and non-directional? These are nothing. If you have a perspective like there are two types of traders. One will do directional. So directional is basically you are predicting if the market will is going up, then only you will trade, or if the market is going down. So the trend should be upside or downside. In that scenario, you will be trading. If you are trading in those scenarios, you will be directional trader. And if you are trading non-directional, like we saw this triangle strategy, this will be better for those who are doing non-directional. Now coming to the second point, you should be having a trading setup. And why this trading setup is needed? Because like when you are doing option trading, you should be analyzing chart, and then based on the chart you will have to place orders, right? So you need a setup, a single screen setup where you will have a order window, charts and everything. So analysis to execution, that transition should be as much as faster. Next, there should be defined strategies. So in the morning, if you are coming, you should have some strategies. You should like for 30-20 minutes, you should look out the market. Till from 9:15 to 10 o'clock, you can see the market, how the market is going, in which direction, and based on those analysis, you can bet on your strategy. You can basically define your strategy. But before implementing this strategy, you should test it. And for testing, you need to have a paper trade. So
if you come to the OptionX trading platform, we have covered all these things. You will have a single screen setup. If you're doing directional or non-directional, we have a different complete section for directional trading and non-directional trading. Then if you want like different charts, we have multiple charts for analysis, and for execution we have done lots and lots of automations. Now coming to the next major mistakes that traders mostly have. So lack of discipline. So if you are implementing any of your strategy, you should be having some exit criteria, because like if you don't define your exit criterias, you might end up with huge losses, or you might miss some of your opportunities. So in that case, you should be using bracket and cover orders. So these are very helpful feature in real market scenarios. And the next is, you should avoid some of the things you should avoid in the market is over trading and revenge trading. So what happens, like if you start your trading journey, you'll end up with some losses, and you will be like चलो यार, एक तो हमने एक लॉस किया हमने एक स्ट्रेटजी में, अब वापस से उसको ओवरकम करना है, सो विल डू मोर ट्रेडिंग, कि मेरा पहले ट्रेड में मेरा लॉस हो गया, सो नेक्स्ट ट्रेड में विल ट्राई टू बेसिकली उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करोगे. सो ऐसे सिनेरियोज में फिर क्या होता है कि आप फिर इस तरीके से मल्टीपल ट्रेड लेते जाओगे और मल्टीपल लॉसेस होते जाएंगे. तो उसके लिए आपका जो स्टॉप लॉस और टारगेट है, दैट शुड बी डिफाइंड. आपका जो पीएनएल का, कि आज अगर मेरा 2000 का लॉस हो गया तो मेरे को आज ट्रेडिंग बंद कर देनी है. सो यू शुड बी हैविंग दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन वाइल ट्रेडिंग. द नेक्स्ट इज जर्नल्स. Like you should be having daily journals. Why? Because this will be helpful in a long trading journey. You will have a very good analysis of your experience, कि अगर आप हर एक दिन आ रहे हो, आपने पहले डिसाइड कर लिया मॉर्निंग में कि मार्केट का आज क्या व्यू रहेगा, एंड उसके बेसिस पे आपने सारे अपने आज के स्ट्रेटेजी डिफाइन कर दिया, बट मार्केट तो किसी भी तरीके से परफॉर्म कर सकता है. सो एट द एंड यू विल एनालाइज योर ट्रेड, कि आज आपने क्या गलत किया, क्या मेरी कौन सी ट्रेड अच्छी गई, कौन सी ट्रेड खराब गई, एंड आज की मेरी क्या लर्निंग्स रही. सो यू शुड हैव अ डेली जर्नल इन while trading. Now there are few myths in the market, like अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर के आते हैं मार्केट में ट्रेडर्स, कि यार 50 रुपए का ऑप्शन करता, 100 रुपए हो गया, पैसा डबल. एंड देन वो 100 का फिर वो 1 लाख का 2 लाख सोचते हैं, देन 2 लाख से 4 लाख करते हैं, फिर 4 लाख से 8, 8 से 16, 16 से 32, लाइक दैट. बट एक्चुअल मार्केट में ऐसा नहीं होता. सो इफ लाइक अगर मैं बात करूं एक सक्सेसफुल ट्रेडर की, तो उनकी अगर प्रॉफिट मंथ और मंथ बेसिस पे जो रिटर्न कमाते हैं, दैट इज जस्ट 3 to 4%. अगर आप 3 से 4% भी प्रॉफिट कमा रहे हो हर मंथ, दैट मीन्स यू आर अ सक्सेसफुल ट्रेडर. The next will have this lack of patience. A lot of trader they lack in patience. क्या होता है कि आपने कोई एक स्ट्रेटेजी डिफाइन किया, एक दिन ट्रेड किया, 2 दिन ट्रेड किया, अब आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये तो मेरे को प्रॉफिट दे नहीं दे रहा, let's have some different strategy. सो एंड सेम विथ लाइक कुछ लोग होते हैं कि मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज करते हैं. कभी उनको लग रहा है कि मुझे आरएसआई देखना चाहिए, कभी उनको लगता है कि सीपीआर देखना चाहिए, या फिर कभी उनको लगता है यार मार्केट में तो लोग अब वीवैप यूज कर रहे हैं, चलो वीवैप दे ले लेता है. तो इस तरीके से अगर आप फ्रिक्वेंटली अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहे हो, तो कभी भी आपको एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेड नहीं मिल पाएगा. तो आपको वेट करना पड़ेगा. यू विल हैव टू वेट फॉर फ्यू मंथ्स और मे बी 1 year to get a one successful trade, and that one successful trade basically gives you 50-60% of returns. Now coming to the next section, here we have there are different advanced tools are there in the market, but you should be having something which has like the best state of the art kind of order management tools,
and risk management tools. So we will uncover these things in the live session. So you should be having a single screen setup, ladder based tradings, and you should be having some kind of automations with it. Then your entry and exit should be in one click. For modification, it should be as fast as possible, क्योंकि मार्केट कभी किसी के लिए वेट नहीं करता. मार्केट इज continuously moving. If you see an opportunity, you need to grab it as fast as possible. So modification should be at drag and drop. Then there should be multiple risk management tools like bracket orders, auto sl trailings, and profit protection tools. Now so this is the OptionX terminal. uh, if you want to come to this screen, this OptionX, first of all you need to go to optionx.trade. So आपको क्या करना, गूगल पे जाके OptionX सर्च करना, and then optionx.trade पे लॉग इन करना, and then once you log in you'll have this screen. अब इस पे अपन बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे करनी होती है, ऑर्डर्स कैसे प्लेस करते हैं, देन व्हाट आर द थिंग्स यू शुड लुक फॉर. But before that, let us have a proper setup. So to have a proper setup, you can go to this workspace option. This is at the top most corner. Once you click, you will be seeing this workspace. There are different workspaces that I built. So for you guys, I would suggest कि आप ये template use करो. जब आप ये workspace वाले section में आओगे, bottom में आपके पास ये templates का option है. तो जो पहला वाला ये template है, ये है scalper option buy. इसको select करना है, then index select करना है. So for now I'll select Nifty 50. तो जैसे ही सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास ये लेफ्ट साइड में ये हमारा ऑर्डर विंडो आ गया. यहाँ से ही आपकी जितने भी ऑर्डर प्लेसमेंट है, सारी चीजें सब आप यहाँ से मैनेज करोगे. देन इसके बाद इधर हमारा निफ्टी का चार्ट है, इंडेक्स का, एंड देन राइट साइड में हमारा कॉल और उसके नीचे पुट का चार्ट है. ठीक है. अब क्योंकि हमारे पास सारी चीजें मेरे स्क्रीन पे है, तो लेट अस स्टार्ट. तो आप देखो कि एक तो सबसे पहले मार्केट किस डायरेक्शन में, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है. तो अगर यहाँ पे आप देखो, ये अच्छी खासी ग्रीन कैंडल्स बन रही है, वॉल्यूम्स हमारा ठीक ठाक वॉल्यूम्स पे ट्रेड हो रहा है, देन ऑन दिस बेसिस बेसिकली यू कैन डिसाइड द मार्केट ट्रेंड. एंड आपको यहाँ पे लग रहा है कि हाँ ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्योंकि मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स बन गए हैं, वॉल्यूम्स अच्छा आ रहा है. तो लेट अस हैव अ ट्रेड इन कॉल ऑप्शन. तो अब इसके लिए आपको ये लैडर पे आना है. ठीक है. इस लैडर पे सबसे पहले टॉप पे आपको देखना है आप कौन से ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो. तो ये अभी जो ये ऑप्शन है, ये दिस इज निफ्टी 6 Jan 26 300 कॉल ऑप्शन. एंड हियर these are the prices of this option. And इसमें जो ये येलो मार्कर है, this basically indicates the LTP, last traded price. So at 82 is the last traded price of this option. Now these green numbers, as we have seen in the earlier starting part, these are buyers, and in this these red numbers are basically sellers. Now in the left side we have different configuration, different settings. Starting from here, NRML and MIS. What are these? NRML is basically if you're taking any position and you want to carry forward those position to the next day. कि आपने ये ऑप्शन कर दा, अब इस ऑप्शन को आप आज कर दे, इसको आप होल्ड कर रहे हो कल के लिए, तो इन दैट केस यू विल यूज NRML. एंड फॉर MIS इज बेसिकली फॉर इंट्राडे. अगर आप चाहते हो कि ये ऑप्शन आपने कर दा, मार्केट एंड जैसी हो तो फिर आपकी सारे पोजीशन जो है वो बाहर निकल जाए, एग्जिट हो जाए, तो उसके लिए आपको इंट्राडे करनी है तो आप MIS सेलेक्ट करो. नेक्स्ट है कि आप ऑप्शंस को चेंज करना है. अब ऑप्शन का अंडरलायर है, अंडरलायर कुड बी एनीथिंग, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो. ठीक है. उसके नीचे एक्सपायरी, तो देयर कुड बी मल्टीपल एक्सपायरीज, वीकली होती हैं एक्सपायरी, मंथली, लाइक दैट मल्टीपल एक्सपायरी है, सो यू कैन सिलेक्ट आउट ऑफ दीज. देन स्ट्राइक्स. तो अभी जो निफ्टी का प्राइस चल रहा है 26 300 का, सो you can basically search for different strikes.
then call or put. If you want to change this call to put, just you need to click here. It will change to put. Now comes the order types. We have already understood like limit order and market orders, but there are different things like there are multiple order types here. There are single, bracket and cover. What are these? So basically सिंगल पे जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो सिर्फ एक आपका बाई या फिर सेल का ऑर्डर जाता है. ब्रैकेट में क्या होता है कि the by the time you place a entry order or a buy order, it will also come with a target and stop loss. कि 100 रुपए पे आपने बाई करने के लिए ऑर्डर डाला तो वो 100 पे आपका पहले एंट्री ले लेगा एंड उसके ऊपर यू डिफाइंड अ टारगेट ऑफ 20 पॉइंट्स. तो वो 20 पॉइंट ऊपर आपका टारगेट लग जाएगा एंड नीचे आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा. तो दिस इज हाउ ब्रैकेट ऑर्डर वर्क्स. एंड देन कवर. कवर में आपका कोई टारगेट नहीं रहेगा, अपसाइड विल बी ओपन एंड सिर्फ डाउन साइड आपने मैनेज कर रखा है. तो अगर प्राइसेस नीचे आई तो आपका पोजीशन वो एग्जिट हो जाएगा. सो दिस इज कवर. नाउ लेट अस टेक अ ट्रेड. अब ये लैडर है, ये सारे प्राइसेस है. अब इस लैडर का ये फायदा है कि आपको सारे प्राइसेस दिख रही है. आपको जिस भी प्राइस पे ऑर्डर लगाना है, यू जस्ट नीड टू क्लिक एट दैट प्राइस. तो लेट्स सपोज अगर प्राइस अगर आपको ये ऑप्शन खरीदना है एट 75, यू जस्ट नीड टू क्लिक. तो 75 पे आपने जैसे ही क्लिक किया आपका ऑटोमेटिकली एक ऑर्डर लग गया 75 पे. सो दिस इज वन क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट. एंड इसको अगर मॉडिफाई करनी है कि अब भाई इसको मुझे मॉडिफाई करके ऊपर की तरफ लेके जाना, सो विल जस्ट डू दैट. तो ये प्राइस मॉडिफाई हो जाएंगे. सो दिस इज हाउ सिंपल price modification is in this platform. If you want to cancel this that is also at one click. ये क्रॉस आइकन आ जाएगा जैसे आप कर्सर यहाँ पे लाते हो. क्लिक ऑन दिस, ऑर्डर विल गेट कैंसिल्ड. नाउ इफ यू वांट टू प्लेस एट मार्केट, कि ये प्राइस मार्केट पे जो भी प्राइस चल रहा है अब उसी प्राइस पे खरीदना है, तो उसके लिए आप इधर यहाँ पे बाय मार्केट और सेल मार्केट का बटन है, यू कैन यूज दिस और यू कैन सिंपली क्लिक अबव दिस प्राइस. 80 पे मैंने बिड किया तो प्राइस चल रहा था उस टाइम पे 79, तो इसने 79 पे फिल कर दिया. अब ये जो ग्रीन मार्कर है लैडर पे, अगेन दिस इज योर एवरेज प्राइस. आपने जो ऑप्शन खरीदा है उसका जो एवरेज प्राइस होगा वो आपको लैडर पे दिख जाएगा. ये 79 जो है ये हमारा इस ऑप्शन का भी एवरेज प्राइस है. नाउ हमने मार्केट में एंटर तो कर लिया 79 पे. नाउ इफ यू वांट टू पुट अ स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस डालने के लिए यू नीड टू स्विच टू एसएल. ठीक है, ऑर्डर टाइप में आपको एसएल सिलेक्ट करना है. एंड देन अभी जैसे 79 पे हमने एंटर किया था तो यहाँ से 5 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाना 74 पे. तो आई क्लिक हियर, इट विल प्लेस अ स्टॉप लॉस ऑर्डर. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, बाय ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं बिड वाले कॉलम में, और जो सेल ऑर्डर्स हैं वो हम प्लेस कर रहे हैं ऑफर वाले कॉलम में. तो इट्स सिंपल. तो आप यहाँ पे सारे प्राइसेस है, अब जिस भी प्राइस पे आपको बाय ऑर्डर लगाना है आपको बिड वाले कॉलम पे क्लिक करना है, ये जो हमारा सेकंड कॉलम है. और अगर सेल के ऑर्डर लगाना है तो ऑफर्स वाले कॉलम में क्लिक करना है. सिंपल. अब एक और आपको इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पे बताते हैं. अब ये जो हमारा स्टॉप लॉस है इसको आप ऑटोमेटिकली ट्रेल करना चाह रहे हो कि अगर प्राइसेस मेरी ऊपर जा रही है तो स्टॉप लॉस भी मॉडिफाई होता रहे. अब क्या है कि हमने 79 पे बाई किया, प्राइस अब ये ऊपर आ गया 89 पे, तो अब हमारा स्टॉप लॉस 74 पे रहे. सो दैट विल नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि प्राइस अब हमारा ऊपर आ गया, हमने 10 पॉइंट का प्रॉफिट कैप्चर कर लिया और स्टॉप लॉस फिर भी मेरा 74 पे ही रहा. तो इट डजंट मेक एनी सेंस. इन दैट केस यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस, कि अगर प्राइसेस ऊपर जा रही है तो मेरा स्टॉप लॉस भी ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ मूव होता रहे. तो उसके लिए क्या करना है कि यू नीड टू कम हियर, ब्रिंग योर कर्सर. यहाँ पे ये अप एरो दिख रहा होगा, यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर, देन ऑटो एसएल ट्रेलिंग विल गेट एनेबल्ड.
अब क्या होगा कि जो प्राइस है जैसे 1 रुपये 79 से ये 80 पे जाएगा, तो मेरा स्टॉप लॉस भी 74 से 75 पे आ जाएगा. So this is auto SL trailing. This is one of the risk management tool that we were talking about in the previous slide. Now अब इस स्टॉप लॉस को अगर आप हाँ मॉडिफाई करना चाहते हो मैनुअली भी, अब तो ये ट्रेल हो रहा है, बट आपको लग रहा है कि 74 का स्टॉप लॉस ये काफी कम है, तो इसको मॉडिफाई करते हैं, इसको नीचे 70 पे लेके जाते हैं. सो यू जस्ट नीड टू डू ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपल. नेक्स्ट अपन डिफरेंट ऑर्डर टाइप देख लेते हैं. ब्रैकेट ऑर्डर. ब्रैकेट ऑर्डर में क्या होता है कि यू डिफाइन योर टारगेट एंड स्टॉप लॉस बोथ, कि ये जो भी मैं अभी ट्रेड लूंगा उसका मेरे को 10 पॉइंट का टारगेट लगाना है, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है. सो आई जस्ट पुट 10 एंड 5 ईयर. नीचे ये कैंसिल का बटन है, तो कैंसिल पे जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए जो ऑर्डर्स ओपन थे, पेंडिंग थे. ऊपर आपको यहाँ पे एग्जिट का बटन मिलता है. सो इफ यू क्लिक ऑन एग्जिट, योर पोजीशन विल गेट एग्जिटेड. सो इट इज वन क्लिक एंट्री एंड वन क्लिक एग्जिट. हाँ, तो अपन ब्रैकेट ऑर्डर देख रहे थे. तो ब्रैकेट में हमने 10 पॉइंट का टारगेट लिया, 5 का स्टॉप लॉस, 75 पे क्लिक किया. हाँ, तो ये 75 पे मेरी एंट्री की ऑर्डर लग गई. ये जो ग्रीन वाला है ये हमारा बाय ऑर्डर है. 85 पे दिस इज आवर सेल ऑर्डर विच इज बेसिकली माई टारगेट. 10 पॉइंट का हमने टारगेट रखा है. एंड देन 70 दिस विल बी माई स्टॉप लॉस. तो uh, जब भी आप मार्केट पे एंटर कर रहे हो, यू शुड बी हैविंग सम डिफाइंड टारगेट एंड स्टॉप लॉस. तो इससे क्या होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है और आपका जो डाउन साइड है वो मैनेज कर सकते हो. कि अब ये मार्केट नीचे भी आया, इट ये आपके ट्रेड के अगेंस्ट अगर ये जाता है मार्केट, तो यू विल एंड अप विथ ओनली 5 पॉइंट ऑफ लॉस. So this is a very interesting feature, or very if you want to manage your risk, you should be using bracket order always. Now I'll modify this. तो अब हमारी अगेन ये पोजीशन आ गई. ऊपर आप देख सकते हो जो ये जो नेट पोजीशन है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपकी टोटल क्वांटिटी कितने आपने बाई किया है, उसका अभी पीएनएल क्या चल रहा है. ठीक है. एंड देन उस हिसाब से यू कैन डिसाइड योर टारगेट एंड स्टॉप लॉस. नेक्स्ट है ये अपन वापस से ये स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग पे लगा देते हैं. अब ये जो ट्रेलिंग है इसकी सेटिंग्स यू कैन ऑल्सो डिसाइड, कि अगर जो प्राइसेस है ये 2 रुपए से मूव होती हैं तो स्टॉप लॉस को सिर्फ 1 रुपए से मूव करना. बेसिकली यू कैन डिसाइड द स्पीड ऑफ योर ट्रेलिंग. उसके लिए बॉटम पे आना है, ऑटो एसएल ट्रेलिंग. सो दिस ट्रेलिंग इज करेंटली 1:1. यू कैन चेंज दिस टू 2:1. अपडेट लाइक दिस. तो ये हमने अभी कॉल पे ट्रेड लिया. ठीक है. इसको अपन एक बार पुट पे देखते हैं. कैंसिल किया, एग्जिट किया. अब ये कॉल से पुट पे चेंज करते हैं. एंड मीनवाइल अगर किसी को कोई भी क्वेरी है, यू कैन पुट योर क्वेरीज ऑन चैट. अब चैट पे डाल सकते हो. नाउ अब ये जैसे पुट पे चेंज किया, ऊपर आप देखो ये 26,300 का पुट हो गया. इसका प्राइस अभी चल रहा है 65. आई विल डायरेक्टली एंटर हियर एट. अब ये जो हमारी पोजीशन आई है ये 65 पे आई है. टारगेट इज 75 and my stop loss is at 60. So this is how you can basically use this price ladder to place your trades. Now I'll go to the position table. ये ऊपर पोजीशन का बटन है, इस पे जैसे मैंने क्लिक किया ये पोजीशन का टेबल आ गया. अब यहाँ पे एक और हमने रिस्क मैनेजमेंट की फीचर दी है, प्रॉफिट प्रोटेक्शन. अब ये क्या करता है कि इट विल बेसिकली कैप योर पीएनएल
कि अगर अभी जैसे ये प्रॉफिट चल रहा हमारा 5,500 का, कि अब ये जो 5,000 का प्रॉफिट है, अब ये गिर के जीरो भी हो सकता है और ये लॉस में भी जा सकता है, बट यू वांट दैट दिस प्रॉफिट शुड बी लाइक प्रोटेक्टेड, कि अगर ये 5,000 का प्रॉफिट है, ये मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट भी जाता है, सो एटलीस्ट ये 5,000 का प्रॉफिट मेरा बुक होना चाहिए. तो इन दैट सिनेरियो यू विल यूज दिस प्रॉफिट प्रोटेक्शन. So select all your position. First of all, click on this profit protection, select your position, and then put the target and stop loss here. So 5,600 का भी मेरा प्रॉफिट है. I'll put a target of 10,000 कि अगर मेरा 10,000 का प्रॉफिट आ जाता है तो मेरी जितनी भी पोजीशंस है सब एग्जिट हो जानी चाहिए. तो I took a 10,000 target of profit and stop loss I'll put at 5,000. तो अगर ये मेरा मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जाता है तो एटलीस्ट आज मैं 5,000 का प्रॉफिट तो बुक करके जा रहा हूँ. सो दिस काइंड ऑफ प्रोटेक्शन यू शुड ऑलवेज you should be considering these kind of stop loss and target, so that market में क्या होता है ना कि आपने 4-5 ट्रेड ले लिया, you booked some profit, and then at the end मार्केट क्लोज होने के पहले आपने एक और ट्रेड ले लिया जिसमें you got huge losses, और उसकी वजह से दिन भर का जो आपका जो भी प्रॉफिट था वो भी चला गया. तो उस केस में ये these profit protection kind of risk management tools will be very much helpful. Now you can also trail this stop loss. तो अगर this is basically some automations कि अब आप स्क्रीन पे नहीं हो और आपका प्रॉफिट ये 5,000 से आपका जो प्रॉफिट 6,000 का था अभी बढ़ के लेट्स सपोज ऊपर आ गया 7,000 8,000 पे आ गया, and you want to you are not at the screen and you want that this stop loss should be increasing automatically, this should be trailing automatically. In that case you can enable this MTM trailing. अब इसमें क्या होगा कि अगर ये 100 का मैंने रख दिया कि फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ इन प्रॉफिट बाय 100 माय MTM शुड ट्रेल बाय 100, और इसको सेव कर दिया. तो अब ये जो रूल है दिस इज नाउ एक्टिव. तो अगर मेरा ये 10,000 का प्रॉफिट देता है ये मेरे ऑप्शंस मेरी पोजीशंस, तो मेरी जितनी भी पोजीशन है सब ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएंगी. या फिर ये 5,000 का लॉस दे देता है, so in that case also this will get squared off. And sorry, this is not 5,000 loss, this is 5,000 profit. तो एटलीस्ट आज आप 5,000 का प्रॉफिट तो लेके जाओगे. So this is how you should be managing your P&L. Now here you have exit button. तो अगर आपको immediately सारे पोजीशन एग्जिट करनी है, you should use this exit button to exit all your position. Select किया exit all, position got exited, and I booked around 6,000 profit. So this is how this tool works. And then you have open order table. So there might be some orders, some target, some or stop loss that you have placed, but price doesn't like went there कि 100 रुपए पे आपने ट्रेड एक ऑर्डर लगा दिया, प्राइस अभी 120 की चल रही थी, और वो प्राइस जब तक नहीं आएगा तब तक वो ऑर्डर ओपन रहेगा आपका. सो इट दोज ऑर्डर्स विल बी शोन हियर इन प्राइस इन ओपन ऑर्डर. देन दीज आर द एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स. जितने भी आज हमने ट्रेड लिया उसके सारे यहाँ पे लॉग्स हैं. नाउ does this platform also provide paper trading? I want to forward test my strategies. Yeah, sure. So currently whatever trades we were taking, this was in practice mode. So at the top here you can see there's a toggle button. So if you enable this you will be entering into practice mode, and with this you will have 5 CR of virtual fund. Now yeah, now coming to the next part, if you go to this widget section you'll have multiple more features here.
So the ladder, the price ladder which we have seen just now, this was the first one, and we have such more like price ladder XY. So this is a very good for automations. So I'll show you now. You just need to click here, select your underlayer, and it will open this XY ladder. अब इसमें इस XY ladder पे कैसे ट्रेड करना है वो मैं बताता हूँ उसको. अब ये निफ्टी का चार्ट है. सो अपन एक ट्रेड लेते हैं at some resistance or support. Okay. Let's take it here somewhere. There is a high at 312. ठीक है. So अभी निफ्टी ने जस्ट एक हाई बनाया था 312 पे, and we want to basically enter into the market once Nifty will break this level. अब क्या होगा कि निफ्टी का आज डे हाई था 312 का. सो अगर ये वापस मार्केट ऊपर की तरफ आता है, क्योंकि आप देखो आज मार्केट बुलिश रहा है. कैसे कि मार्केट में कंटिन्यूअसली अच्छे ग्रीन कैंडल्स बने और ये हायर हाई बना रहा. हायर हाई एज इन कि ये जो सबसे लो था 234 पे था. अब जो नेक्स्ट फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया 270 तक. अब यहाँ से वापस मार्केट नीचे की तरफ आया 243 पे. तो अब ये दोनों का जो लो है, ये आप देखो कि जो पहला लो था वो नीचे था, जो दूसरा लो है दिस इज एट 243. तो इट मीन्स और जो नेक्स्ट ये जो हाई था ये अराउंड 260 270 के अराउंड था. अब इसके बाद का भी जो नेक्स्ट हाई बना वो 270, एंड देन इसके बाद फिर एक और हाई बना है 290 के अराउंड, एंड देन इट वेंट अप टू 312. सो विच मीन्स मार्केट में एक अच्छा बुलिश ट्रेंड चल रहा. सो हमारी जो आज की जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो बुलिश ट्रेंड के हिसाब से ही रहेगी. सो I will be capturing those trades where I have a very good movement in call option. ठीक है. तो अभी जैसे यहाँ पे ये सारे ग्रीन कैंडल्स बने, so I would have tried for capturing these green candles. ठीक है. नाउ अब क्योंकि निफ्टी ने ये एक हाई बना दिया 312 का, वी विल वेट टू क्रॉस दिस लेवल. तो ये 312 क्रॉस करेगा कहाँ पे, लेट्स सपोज 315 पे करेगा. तो मतलब कंफर्मेशन हम ले रहे हैं कि 312 क्रॉस करके ये वापस नीचे भी जा सकता है. सो वी आर जस्ट फॉर द सेफर साइड वी विल बी टेकिंग ऑर्डर एट 315. नाउ इसको एग्जीक्यूट कैसे करना, ये तो हमने चार्ट पे देखा, हमने लेवल्स देख लिया कि हाँ भाई अब जब निफ्टी में 26,315 का लेवल आएगा तो मुझे एंटर करना मार्केट में. तो उसके लिए क्या करना है, एक्स वाई लैडर पे ये ऊपर आप टॉप पे देखो, लेफ्ट साइड में ये ऑप्शन है 26,300 का कॉल ऑप्शन है. राइट में हमारा निफ्टी 50 है, विच मीन्स अब ये जो प्राइसेस आ रही है ये सारे निफ्टी के प्राइस है, निफ्टी के लेवल्स है, एंड वी आर ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव ऑफ निफ्टी. तो अब इसका जो डेरिवेटिव है ये दिस इज ऑप्शन इज द डेरिवेटिव ऑफ निफ्टी 50. हाँ, तो हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है, 26,315 पे. तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं लैडर पे कि यहाँ पे ये 26,315 है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑर्डर लगाएंगे. बट क्योंकि हम इस प्राइस के ऊपर ऑर्डर लगा रहे हैं, सो यू शुड स्विच टू एसएल. एसएल पे स्विच किया हमने 26,315 पे क्लिक किया और ये हमारा ऑर्डर लग गया कि अब मार्केट में अब जैसे ही ये वापस से लेवल आता है ये ऑटोमेटिकली बाय कर देगा. सो यू डोंट हैव टू बी एट द स्क्रीन ऑल द टाइम. So these kind of automation you can use if you have some breakout kind of strategy. And for again you that I have suggested you to have some risk management. So उसके लिए यहाँ पे आप क्या करो, स्विच करो ब्रैकेट पे, 20 पॉइंट्स का टारगेट, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लिया. अब मैं क्या करूंगा, वापस यहाँ पे एक ऑर्डर लगाता हूँ. हाँ, अब इसमें अब क्या कर रहे हैं अपन कि 26,315 पे अपन अगर प्राइस आता है वापस तो अपन एंटर करेंगे पोजीशन में. वो एंट्री हमारी कहाँ पे होगी, इस कॉल ऑप्शन में. ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं,
जैसे निफ्टी में 26,315 का लेवल आ रहा, हम ये 26,300 का कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जैसे ही हमारा मार्केट नीचे अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो आई विल इजीली कैप्चर 20 पॉइंट्स। तो हमने 20 पॉइंट्स का टारगेट रख दिया, 335 पे आ जाए मेरा निफ्टी, तो मेरे ऑप्शंस में जो भी हमने पोजीशन लिया उसको अपन एग्जिट कर देंगे। लेकिन अगर मार्केट ने आ, ये जो ब्रेकआउट था ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, मार्केट 315 क्रॉस किया बट वो फिर वापस नीचे की तरफ चला गया, तो यू शुड बी हैविंग सम स्टॉप लॉस। तो हमने ये 305 पे हमने एक स्टॉप लॉस ले लिया, 2635 पे। सो हाँ, तो दीज काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट यू शुड ऑलवेज बी फॉलोइंग इन योर ट्रेड्स। Yeah, so I think I have covered most of the things. You guys can also uh, use this practice mode to start your trading journey, to practice your strategies, and to every time while trading, you should be like after the market closed, after your trades, you should be should jot down all your learnings from this trading sessions. Now. Uh, I have one more things for you guys. Let me share again. Yeah. So for you guys, we are introducing this OptionX trading platform. It's a very comprehensive trading platform. You get lot of things, lot of automations, many different charts, and the execution is state of the art execution. Whether you are placing a like single order, single buy order, or you are placing a bracket order, जहाँ पे आपका एंट्री के साथ टारगेट स्टॉप लॉस जा रहा, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स you will be able to place at single click. So you will get this platform at zero cost with the 5 CR of virtual fund. So if you scan this QR code and sign up to the platform, you will have 5 CR virtual fund in your account, and you will have a unlimited access. अब ये जो 5 CR का वर्चुअल फंड है, इसको यूज करके आपको जितने भी ट्रेड्स लेने हैं आप ले सकते हो, एंड विदाउट एनी कॉस्टिंग। So even sign up के लिए भी कोई cost नहीं है. There is no credit card needed. So just go and sign up, and this 5 CR virtual fund will be added in your account. So yeah, Shraddha, over to you. Yes, so we can begin with the question and answer session. Like, there are people asking questions in the chat. Sure. Where can I find the strategies to practice? Okay. So you need to go to optionx.trade. I'll basically put the website URL also, or either you can scan this QR. Please ask as many as questions possible, because right now I can show you in the platform like how the execution and everything works. What are the, if you haven't understand some of the things, I can assure you. It's showing just 7 days. No, Harsh. 7 days is free trial is for people who want to do real trading. But for you guys, we have brought this platform at zero cost. Can we take call, put, writing, trade in OptionX as the same as for the buying? Yeah, definitely, Aditya. Um, if you go to OptionX trading platform, I'll basically show you again if you haven't understood. So OptionX platform, if you go to widget section, you'll have the strategy builder. In strategy builder, we can select this strategy. So if you come here, you'll have different multiple strategies. Bullish, like अगर आपका view है market में bullish के लिए, तो ये सारे strategies हैं. If you're having a outlook as bearish, you can use these strategies: buy put, sell put, bear call, bear put spread, like that.
And if you are going for neutral strategies like short straddle, strangle, iron butterfly or condor, so these things you can basically all these strategies you can find it here. And if you want to trade these strategies, you can click on that strategy and all the legs will be added. So here there are four different options, and if you want to trade these options, it is very much convenient in our platform कि आपको क्या करना है, बस लैडर पे क्लिक करना है। ये स्ट्रैटेजी को मैंने जैसे लाइक नाम दे दिया आयरन कॉन्टोर। हाँ, तो आप जैसे ही ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनाते हो बिल्डर पे, you'll have the access to the ladder, and इस लैडर पे आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी की प्राइस दिख रही होंगी, और यहाँ पे आप इसका चार्ट भी ओपन कर सकते हो। सो दिस चार्ट विल बी ऑफ मल्टी लेग स्ट्रैटेजी चार्ट। अब ये जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस। दो पुट ऑप्शन है, दो कॉल ऑप्शन है ऑफ डिफरेंट स्ट्राइक्स, और इसका नीचे आपको यहाँ पे पे ऑफ चार्ट मिलता है। सो दिस पे ऑफ चार्ट इज नथिंग, you can see the max profit, loss, break events, and what is the probability of getting profit in this strategy. Now we'll also have this chart. So let me just show you this chart. So this is one of the like best strategy, in like which is iron condor. This is a selling strategy, and here I'll show you by placing a trade. I'll take a 10-point target, 5-point stop loss. I'll directly place it here. Now, uh, if the price that there's price, all the legs इस strategy के अंदर जो हमने ये जो चार options ऐड किए हैं, ये चारों option automatically आपके execute हो जाता है with a target and stop loss. So this is what benefits you get if you use this strategy का ladder. So this is like in the, if you go to widget section, you'll find this spread ladder. So ये वही ये spread ladder है. So you will be trading multiple spreads using this ladder. Are all these for free, or do I need to purchase for the upgrade? So if you are going for paper trading for learning, it is completely free. And yeah, if you want to do real trading, you need to subscribe for free trial, which is 7 days free trial. For 7 days, you will be able to use all our feature, and you will be able to do real trading. So yeah, अगर आपको रियल ट्रेड करना है तो उसके लिए you need to go for any plan, either is free trial or any paid plans. How do professional traders use indicators? Do they stick to one indicator, use combination of them? Which indicator should I use as a beginner? Yeah, sure. So there are multiple indicators, but if I talk about this iron condor strategy, what people used to do, they used to use VWAP. VWAP पे क्या है कि अगर प्राइसेस जो ये कैंडल्स है, ये अगर वीवैप के ऊपर चल रही है, इसका मतलब है कि मार्केट में लाइक यू कैन बेसिकली डिफाइन योर एंट्री बेस्ड ऑन दिस इंडिकेटर, बेस्ड ऑन दिस वीवैप। तो अगर सारे प्राइसेस, सारे कैंडल्स ये वीवैप के ऊपर चल रही है, then you can carry your position and you can get good profit till it breaches this level. अगर ये वीवैप का ये जो हमने लेवल लगाया वीवैप का इंडिकेटर, इसके नीचे जाता है मार्केट, then you should exit your position. So in this strategy, in this iron condor strategy, you can use VWAP, and VWAP is basically, it's a volume weighted average price. So we multiply price with the volume to get a exact price of this strategy. तो अगर प्राइस इस VWAP के ऊपर चल रही है, इसका मतलब है कि you can carry your position, or you can enter into this strategy. एंड हाँ, अगर आप सिंगल ऑप्शन में ट्रेड करना है, अगर स्टार्ट कर रहे हो बाइंग करना है, तो बाइंग के केस में यू कैन यूज वॉल्यूम, एंड
तो you can see the volumes कि volumes अगर if you are having a good volume over here and the candles are in green, तो अगर green candle बन रहा, volume अच्छी आ रही है, तो it means market is bullish, and based on that you can enter into any positions. और indicator की बात करूँ, so there are a lot of indicators. So you need to test all those things, all indicators. If I like if I tell some of the names like RSI है, ADX है, CPR है, like that there are super trend, VWAP, multiple indicators. For beginners, you can use the volume and you can decide based on the candles. Can you create one indicator which draw a line based on the change in OI data and Nifty chart, which helps me in option selling and then take a position if any breakout or sure, sure. So yeah, let me show you one more chart over here. This OI chart. This is a basically option open interest chart. As we have understood in the slides that OI is just the open contracts. So if people are uh, like if you see this candle, it has increased from this point to this point. तो ये जो shaded line है, this indicates OI increase and this box line indicates OI decrease. तो इसका मतलब है 26,2000 पे पुट OI इंक्रीज किया है, तो ये बेस्ड ऑन दिस यू कैन ट्रेड ऑन 26,200 कि अब ये हमारा एक अच्छा, अब मार्केट जो है ये चाह रहा है कि अब ये जो प्राइसेस है ये 26,200 के नीचे नहीं जाएगा. सो बेस्ड ऑन दिस यू कैन पोजीशन योर ट्रेड. तो अगर अगर मेरे को यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी बनानी होती, सो आई वुड हैव चोज 26,200 का पुट ऑप्शन. So I'll go to neutral, I'll use maybe straddle, and I'll switch this strike to 26 ka 26,300. Yeah. So now you can open the ladder. You can open chart. So जो आप indicator की बात कर रहे थे, you can put your indicator in this strategy chart. So if you have any indicators like super trend आपने ऐड किया, and based on this super trend का chart you can place your selling strategy. अब ये ladder है, अगर आप जैसे यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हो, so both the legs, both call and put automatically get sold. So ये सेलिंग के लिए, शॉर्ट करने के लिए, ये आप यहाँ पे बस क्लिक करो, ये आपका ऑर्डर लग गया एंड इट विल ऑटोमेटिकली प्लेस ऑर्डर्स इन बोथ द लेग्स. तो अगर मैं इसको फिल कराऊं, यस, सो 207 पे हमारी ये जो स्ट्रैटेजी है ये फिल हो गई है, और इसका पीएनएल दिख रहा है, इसकी क्वांटिटी दिख रही है. एंड देन लैडर पे अगर आप आओगे तो लैडर पे आपको एवरेज प्राइस दिखता रहेगा कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है इसकी प्राइस क्या है. ठीक है. एंड देन बेस्ड ऑन दिस यू कैन डिफाइन योर स्टॉप लॉस. यू कैन पुट दिस इन ट्रेलिंग. तो यहाँ पे कंबाइन प्रीमियम लेवल पे जो हमारी दोनों लेग्स की जो कंबाइन एलटीपी थी, इसका 143 चल रहा है, इसका 64. इफ यू कंबाइन बोथ ऑफ दीज टू, it will the LTP will be 207, and you can see the entry price in this strategy, and then what is your stop loss.